أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين. Unit number 6, Simple chemical reactions. The syllabus of this term is given here, and the syllabus of this chapter is also here. Page number 72 and 73 are completed. And now the page number 74, types of chemical reaction. This is our topic for today. The revision of this unit is also here. In simple chemical reactions, changes can be divided into two groups. Number one is the physical change, and the number second is the chemical change. We have detailed discussed upon physical change and chemical change. I think you have to understand this one. Only for revision, I want to tell you about the physical change. Is the change in position and the chemical change is the change in composition. In physical change, no new substances are made, and in chemical change, one or more new substances are formed. In physical change, energy is not always given out or taken in, and in chemical change, energy is always given out or taken in. In physical change, it can be reversed, and in chemical change, it's usually very difficult to reverse. In chemical change, the changes are the permanent and their composition is changed, so it is very difficult to return back. If you burn a paper, it turns into ash, and it's not possible to again return in it to paper form. Oil is burned, and it's also not possible to return in the form of oil. And the vegetables are cooked, now they are not possible to return back. And the toast is burnt, so it is also not possible to return it back. So the chemical changes are the permanent changes. In these changes, in their composition is changing, their molecules are changing, so it is not possible. And in the physical changes, the shape is changed, and shape can be reversed with some efforts. Here are also some examples. Canes are crushed. It also can be reversed after some efforts. Here is the food is chopped and that is mixed. These are some vegetables, so it is also possible to return after some difficulties. The water turns into ice, and again it can be turned
into water, but there is no composition is changed because the water turn into solid and again turn into gases. So it's also a physical change. So the resultant, we can say that the physical change is reversible and the chemical change is permanent change. Types of chemical reactions are synthesis. Number 1. The reaction between iron and sulfur to form iron sulfide is called a combination or synthesis reaction. This is because two different substances combine to make a new single substance. Another example of synthesis reaction is burning of magnesium in oxygen. Here is a chemical equation is also here. Magnesium plus oxygen, when it reacts, it turns into magnesium oxide. In the diagram, magnesium oxides are also given here. You can look here. And the magnesium ribbon burning in oxygen is also showing in diagram, and you can see it. In synthesis reaction, the reaction between iron and sulfur to form iron sulfide. Is called the combination. This one is called the combination. There is another example. These are the given the diagrams of the magnesium oxide and magnesium ribbon burning in oxygen. The rusting of iron is also a synthesis reaction. Iron combines with oxygen in the presence of water to form iron oxide or rust. As you know that when you put the iron into a water place or outside your home, after some time it turns into blackish. Its color is turning, so it is rusted. इसका मतलब ये है कि इसको जैसे कि जंग लग जाना, लोहे को जंग लग जाना। लोहे को जंग लगने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है कि तो मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इनकी प्रेजेंस के अंदर यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होगी तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि इसको रस्टेड आयरन। जैसे कि आपको एक डोर दिखाया जा रहा है, एक पुराना डोर है, बंद पड़ा है, तो इसको अब जंग लग चुका है, यानी कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी हम सिंथेसिस रिएक्शन कह सकते हैं। आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, नमी का होना बहुत ज़रूरी है टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, तो ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर नमी मौजूद ना हो तो ये जो आयरन है वो उसमें चेंज नहीं होता। इसलिए
इसको रस्टिंग से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, यानी कि इसको इसकी जो सरफेस है उसको कोट कर दिया जाता है। अब उस कोट करने की वजह से उसके ऊपर जो पानी है और ऑक्सीजन है उनका असर नहीं होता और उसको जंग नहीं लगता। बेसिकली जंग जो होता है ये लोहे को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है उसको वो ख़त्म कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए ये जो ग्रिल होती हैं आपके घरों के बाहर लगी होती हैं या खिड़कियों की ग्रिल होती हैं या गांव में ये टी आयरन वगैरह लगे होते हैं और वो गार्डर वगैरह छतों पे चढ़े हुए थे, तो इनको पेंट किया जाता है। अगर उनको पेंट ना किया जाए तो वो उनको जंग लग जाता है, जंग लगने की वजह से जंग उनको खा जाता है और वो गिर जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए लोहे को जो है वो पेंट किया जाता है। कम अज़ कम साल में एक दफ़ा लाजमी पेंट करना पड़ता है, इसके बगैर ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है आयरन प्लस ऑक्सीजन, जब इनका कॉम्बिनेशन मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और ये डोर आपको सामने दिखाया गया है, मैंने अभी डिस्कस भी किया है कि इसको अब ये जंग आलूद हो चुका है, ये काफ़ी टाइम गुजर गया है इसको, तो इसको पेंट वगैरह भी नहीं किया गया। तो अब ये इसको जंग जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, खाया जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है डीकम्पोजिशन। Decomposition is the breaking up of a single compound into two or more simpler products. Energy is needed to break the bonds. पहले तो ये होता था कि कोई से दो एटम्स मिलते थे तो उनसे एक नई चीज़, कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती थी। अब ये कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है उसको अब चेंज किया जा रहा है उसके जो बेसिक्स हैं उसके अंदर, यानी कि डीकम्पोजिशन। उस पहले कंपोजिशन की जा रही थी, अब उसकी डीकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग अप ऑफ सिंगल कंपाउंड। उस कंपाउंड को अब तोड़ा जा रहा है इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। तो इसके लिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एक डायग्राम आपको सामने दिखाई जा रही है, इसमें कार्बन कॉपर कार्बोनेट है, इसको हीट किया जा रहा है तो ये टर्न हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इसके आखिर में जो बच रहा है वो कॉपर ऑक्साइड बच रहा है। तो ये उसमें टर्न हो रहा है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। तो ये नीचे एक इसकी डायग्राम भी दी गई है और उसके साथ एक इक्वेशन भी दी गई है कि कॉपर कार्बोनेट टर्न्स इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह ये नीचे एक और भी डायग्राम है जिसके अंदर ये कॉपर है, उसके बाद ऑक्सीजन के यानी कार्बोनेट है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स हैं और ये टर्न हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज द यूज ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड it changed from a green powder to black powder. The green copper carbonate breaks down into black copper oxide
and carbon dioxide gases in the presence of heat। तो ये आपको सामने दिखाई जा रही हैं ये डायग्राम्स, आपकी बुक के ऊपर भी ये मौजूद हैं पेज 75 के ऊपर। और उसके साथ साथ ये जो एक इक्वेशन है वो भी आपको दिखाई जा रही है कि कॉपर कार्बोनेट है, उसको एक फनल के अंदर डाला गया है। अब उसका जो कलर है वो ग्रीन है। अब इसको हीट अप किया जा रहा है, तो ये उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी कि इसको ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। ये जो एक सिंगल कंपाउंड था, ये जो कॉपर कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड था, अब इसको चेंज किया जा रहा है, इसको हीट दे करके चेंज किया जा रहा है। अब इसके आगे मज़ीद जो है वो दो सिंपलर कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा वो जो ग्रीन कॉपर था वो अब कॉपर ऑक्साइड बन गया है और उसका कलर जो है वो ग्रीन से ब्लैक हो गया है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस था ये प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन था। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने ये सीखने की कोशिश की कि केमिकल रिएक्शंस की कौन सी इकसाम होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है। तो आग जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न आउट हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आग के जलने में मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ एक दूसरी एग्जांपल भी आपको दिखाई गई है यहाँ पे कि आयरन जो है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और साथ उस पर मॉइस्चर भी होता है, यानी उस पर नमी भी होती है या उसमें पानी ऐड हो जाता है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड में क्या है कि ये रस्टेड आयरन है, इनके आयरन को लोहे को जंग लग जाता है। तो ये जो पुरानी इमारतें होती हैं उनको जिनकी कोई केयर नहीं की जाती तो वहाँ पे ये जंग आलूद चीज़ें आपको देखी जा सकती हैं। इसी तरह अगर आपके घर के बाहर तो ग्रिल लोहे की लगी हुई है या इस तरह की कोई अप्लायंसेस हैं, तो अगर आप उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, आप उनको पेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी उनका कलर भी चेंज हो जाता है और उनको भी जंग लग जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।